Today's topic is software testing metric. तो इसको स्टार्ट करने से पहले इन लेमन टर्म्स मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेट्रिक हम क्यों यूज करते हैं. Whenever software get developed, जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो जगह पे टेस्ट होता है, एक जहाँ पर वो डेवलप हुआ होता है वहां पे टेस्ट होता है, ठीक है. दूसरा, जिसने उसको परचेज करना है वो अपनी जगह पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है. इसका मतलब डेवलपर, द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, वो टेस्ट करती है, एंड द कस्टमर हु इज परचेजिंग द सॉफ्टवेयर वो भी टेस्ट करता है, ठीक है. एंड बोथ ऑफ देम मेक टेस्टिंग, दोनों अपनी तरफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है. जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. एंड जब when customer purchase the software, जब customer software purchase कर लेता है, then that customer will uh, not test as per the requirement that he has submitted. जो सब उसने सबमिट कराई थी वहां पे उनको तो लेके करता करता, बट उसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर देता जो उसने वहां पे नहीं भेजी, ठीक है. That can be a minor one, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कि आई एम टेकिंग योर क्लास, ठीक है. सो क्लास लेते वक्त मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है. क्लास लेने से पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करना भूल गया, ठीक है. क्लास से लेते वक्त मैं आपको पूछना भूल गया आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है. सो व्हाट आई फील, मैंने जब क्लास ले रहा था तभी मेरे को याद आया ये चीज मैं भूल गया था. एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई आस्क्ड ऑल दिस थिंग्स, अगले मोमेंट मैंने आपसे पूछा आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है. मैंने आपको गुड मॉर्निंग भी विश कर दिया, ठीक है. एंड अदर फ्यू थिंग्स. सो मैंने अपनी टेस्टिंग करके वेरीफाई कर लिया कि जो चीज मेरे को लग रहा था मैंने नहीं की वो बच्चों को कर दिया थे, अब वो ठीक हो गया, ठीक है. दैट्स फ्रॉम माय साइड. नाउ यू आर द कस्टमर, आप कस्टमर हो, ठीक है. सो आई एम अ डेवलपर, मैंने अपनी तरफ से देखा कि जो कुछ सही था मैंने वो ठीक कर लिया, टेस्टिंग करने के द्वारा उसको मैंने ठीक कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, अपडेट कर लिया. बट व्हेन नाउ द सॉफ्टवेयर रीच टू द कस्टमर एंड ना, सो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट यू कैन नॉट सेटिस्फाई द कस्टमर, है ना. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी ये बात है, इट इज वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट टू गेट द 100% सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी. 100% सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी लेनी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना हर एक की बस की बात नहीं. कस्टमर विल नेवर सेटिस्फाई एट एनी एंड, ठीक है ना. उसने कोई ना कोई ऊपर नीचे बात बोल देनी है कि आपको इसमें ये कम रह गया, ये ठीक रह गया. So it means software efficiency is very difficult to be reached on 100%, but it can be reached up till 90 and 95% also. ठीक है. So this is what software testing is, कि साथ साथ हमने every step, every stage we keep on testing our software, कि जितना काम हमने किया है क्या वो ठीक किया है. एंड टू टेस्ट वी यूज सम वेरियस मेट्रिक्स. इसको टेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स यूज करते हैं. सो वो मीट्रिक कौन से हैं वो मीट्रिक आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, कि किन मीट्रिक्स को लेके हम कहेंगे कि जो हमारी टेस्टिंग है ये सक्सेसफुल हुई है, अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है, एक्सीलेंट हुई है, या फिर इतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है. सो this is what today's lecture is, that is a software testing metric. So let's start with the definition of it. Software testing metrics provide quantitative approach to measure the quality and effectiveness of software development and testing process. So software metric क्या है, ये हमें बताता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है और वो कितना इफेक्टिव है वो सॉफ्टवेयर एट डेवलपमेंट एंड एज वेल एज एट टेस्टिंग एंड. डेवलपमेंट में क्या सारा हमारा सॉफ्टवेयर, क्या जो कुछ टूल्स चाहिए से मॉड्यूल चाहिए सारे डेवलप हो गए हैं, और जितने मॉड्यूल जो डेवलप हुए हैं कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है. सो दीज टू थिंग्स हैव टू बी डन व्हेनेवर वी परफॉर्म द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. दैट इज क्या क्या करनी है, क्वालिटी चेक करनी है और इफेक्टिवनेस चेक करनी है इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स. Okay, it helps the team to keep a track on software quality
at every stage of software development cycle and also provide information to control and reduce number of errors. जौन सी भी स्टेज है हम डेवलपमेंट की, चाहे वो हम यू कैन फिजिबिलिटी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, व्हाटएवर, जौन सी भी स्टेज है हम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हम हर एक स्टेज पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं to find that we are getting proper information, we are getting good results, and we are getting least or no errors. ठीक है? So it helps the team to keep track मतलब ध्यान रखना on software quality. जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो. क्वालिटी अच्छी कैसे होगी? अगर जो भी हम वट एवर इनपुट द कस्टमर रिक्वायर वो आउटपुट नहीं कर रही है, ठीक है, एंड जो भी मॉड्यूल हमने तैयार किया उस मॉड्यूल में उस स्टेज में कम से कम एरर हो, कम से कम एरर हो. अच्छी बात है कि एरर ना ही हो, बट स्टिल कम से कम एरर हो. ठीक है. इट अलाउड स्टेक होल्डर to measure the efficiency of the team and accelerate the application delivery. What is stakeholder? जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस कंपनी है या जिस इंडिविजुअल पर्सन ने आपको ऑर्डर दिया कि मेरे लिए ये वाला सॉफ्टवेयर तैयार करना है, आपकी इंडस्ट्री ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज अ स्टेक होल्डर. ठीक है. सो बिजनेस पार्टी में जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, दैट इज स्टेक होल्डर. इट अलाउज स्टेक होल्डर्स टू मेजर द एफिशिएंसी. जब भी कोई आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो, लेट्स से यू वांट टू बाय सम शूज, सो दे आर वेरियस शॉप्स ऑफ शूज ओवर देयर. बहुत सारी दुकानें शूज की होंगी एंड आप हर एक दुकान पर जाके चेक करते हो वैरायटी शूज की, उसकी वैरायटी, उसकी प्राइस, ठीक है, उसका स्टाइल. So you go and measure all these things at every shop. जहाँ सी शॉप आपको बिल्कुल ठीक लगेगी, you reach over there and purchase from there, है ना. Same process is over here in stakeholder. Stakeholder भी हर एक जो कंपनी होती है, डेवलपमेंट कंपनी, उसकी टीम की एफिशिएंसी चेक करती है. क्या वो टीम ने जो पिछला काम किया कितनी एफिशिएंसी से किया है, ठीक है, और कितना टाइम लेके वो मेरा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकती है. ठीक है. So it will also help the stakeholder to measure the efficiency and the acceleration of the application developers. The goal of software testing is to improve the efficiency and effectiveness of the software testing process and to have better decision for further testing processes by providing reliable data about the testing process. जो टेस्ट मैंने स्टेज 1 पे किया है उसका रिजल्ट स्टेज 2 के काम भी आएगा. जो टेस्टिंग में स्टेज 2 में करूंगा वो स्टेज 3 पे काम आएगा. जो टेस्टिंग में स्टेज 3 पे करूंगा वो स्टेज 4 पे काम आएगा. ठीक है. So what is this is what is the software testing metric is. It provides a quantitative approach to measure quality and efficiency. It helps the team to keep track on software quality at every stage of software development. Okay. It allows the business stakeholder to measure the efficiency of team and accelerate application delivery. And also, it helps to make better decisions for further testing processes. Okay. Okay. Some of the example is a test manager must measure the effectiveness of test process to identify the area of improvement. Let's say the test manager be the manager of a bank. ठीक है. एक बैंक है, एक बैंक में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, अकाउंटिंग, ऑपरेशनल, मार्केटिंग, है ना. तो the test manager measure the effectiveness of each section. ठीक है. हर सेक्शन का टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस नोट करेगा. जिसकी इफेक्टिवनेस सबसे कम आएगी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करेगा उसको इम्प्रूव करने की. जिस सेक्शन में वो चेक करेगा कि इफेक्टिवनेस कम है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ एरर्स आ रही है, कुछ डिले आ रहा है, तो वो कोई ना कोई नए तरीके ढूंढेगा, क्या तरीके ढूंढ के इसको मैं और इम्प्रूव करूँ. ठीक है. और यू कैन से जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास में MST1, MST2, MST3 होते हैं. ठीक है. टॉपर्स तो होते हैं, वो तो अच्छे नंबर ले जाते हैं. ठीक है. जो सा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होता है, जिसको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो हर एक MST में क्या करता है, अपने नंबर को कंपेयर करता है एक टॉप स्टूडेंट से
कि अब मैं उसके कितने नजदीक आ गया हूँ, कितना दूर रह गया हूँ। अगर वो उसके नजदीक आ गया इसका मतलब मैंने मेहनत की है। अगर मेरे नंबरों में और टॉपर के नंबर में डिफरेंस आ गया, इट मीन्स मैंने अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाया MST 1 में। अब क्यों नहीं कर पाया वो मैं चेक करूंगा। अब MST 2 जब होंगे मैं वो फॉल्ट वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, एंड आई डेफिनेटली रीच नियर टू द top student of the class. So this is how you can go for the testing matrix. ठीक है, ये आप एक सिंपल एग्जांपल ऑफ योर क्लास कि आप अपनी क्लास में कैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट व्हेनेवर यू हैव MST एंड इन एवरी MST यू गेट सम मार्क्स। हर एक MST में आपके मार्क्स आते हैं एंड यू कैन कंपेयर योर मार्क्स विद द टॉप स्टूडेंट। सबसे होशियार बच्चा क्लास है उससे कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स किसी भी MST में उसके नजदीक आ गए हैं, इसका मतलब आपने अच्छी मेहनत की है। अगर आपके मार्क्स की दूरी बढ़ गई है, आपके कम नंबर आया, टॉप स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आए, इट मींस समथिंग सम मिस्टेक इज बीइंग डन फ्रॉम योर साइड। कोई गलती आपसे कहीं पे हो गई है जो आप अच्छी तरह से पेपर नहीं दे पाए, नहीं पढ़ पाए, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हुई, तो नेक्स्ट MST में आप उसको इम्प्रूव करोगे। ठीक है, सो यूजिंग योर टेस्टिंग मैट्रिक्स। हाँ जी अमरजीत जी, टेस्टिंग मैट्रिक जब आगे बढ़ांगे then I will tell you what is testing metric। तनो पहला मैं क्या सीखा, what is the metric? Metric is what I am asking you, अमरजीत, what is your weight? अमरजीत सिमन को क्या कि सर मेरा वेट 50 है। तो मैं पूछा अमरजीत what is 50? Are you 50 ग्राम kg or whatever it is? Similarly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ testing metrics आएंगे, but when we move further slide by slide then you will come to know what are the metrics। ठीक है, just wait। हाले ਆਪਾਂ just we are cutting introduction to software testing ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ software testing ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं, that we move further। clear है? So why the student want to get good marks? Because he or she want to get good quality result होता है। ठीक है, so why to measure software quality? To evaluate the quality of the current product, to improve the quality of the product। ठीक है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड टेक डिसीजंस ऑन एनालिसिस। so we make some decisions whenever you're going to make some analysis। ठीक है, so I hope so far we have done just 4 slides, and whatever we have done in 4 slides you might have understand। so let's see how much you understand। ठीक है, so let me ask you a simple question, whatever we have done so far, a question from 3 slides only। ठीक है, अब जो क्वेश्चन वो पूछने जा रहा हूँ वो जस्ट जो हमने जो 3 स्लाइड्स अब तक की है उनमें से ही है, एंड लेट्स सी हाउ मच यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू लॉन्च इट। read the question carefully, read the answer carefully, select the answer carefully, and after selecting the answer submit the answer। Very good, go ahead, shabash। majority of students ने सही आंसर देता है,
मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने ठीक आंसर दिया है, बिल्कुल। लेट्स सी बाकी बच्चे क्या करते हैं। Very good. Okay, last 5 seconds to submit this first poll. Okay then, thank you students. So I'm going to close it now. So which of the following is true for software testing metric? Provide the qualitative approach to measure the quality and effectiveness. बिल्कुल ठीक है. It helps to keep track on software quality at every stage of software cycle. ये भी ठीक है. It provide information to control and reduce number of errors, definitely. So the answer will be the all of above. Okay, let's move further. So importance of testing is to take decision on to its evidence or claim and prediction why we are going to make some updation. It helps to understand type of improvement, kitna improvement we have to do, and it is the ease of process of decision making for change. We have to make decisions on the basis of the testing results. Okay, that's where we go for the software testing. Okay, so there are two type of testing that we could discuss today. The one is the process testing, one is the product testing. Okay. So now you see under the process testing, what it is used to improve the efficiency of the process in software-driven lifecycle. So why we perform process metric? We perform process metric to improve the efficiency. So what metrics we can use? What metrics we can use from which we can find the efficiency of the uh, software? क्या metric आप use कर सकते हैं through which we can calculate the efficiency? The very first metric is test case preparation metric. Okay, so the first metric is the test case preparation metric. So what it is, it is used to calculate the number of test cases prepared and the effort spent for the preparation. Okay, I am taking your class. Okay, so I make some test cases. Case one, in every class I have to wish student a good morning and ask for their wish for the good health. And second, I always ask student in every test case that are you listening my voice clearly, that आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, and wait for student result और student answer का मुझे wait करना पड़ेगा yes or no. ठीक है, on the basis of answer, if yes it is good, अगर no then I have to make some changes, some other pattern कि बच्चों को मेरी आवाज पहुंच जाए. ठीक है, थर्ड, after every particular number of slides मैं बच्चों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग कि आपने हम तक अब जो पढ़े और को समझ आया. ठीक है, कि ठीक है कि जो मैं बच्चों में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, उनको समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, सो दिस आर टेस्ट केसेस. लेट्स से मैंने आपको 3 टेस्ट केसेस बताए हैं कि ये 3 टेस्ट करने हैं कि बच्चों को विश करनी है और बच्चों के गुड हेल्थ के लिए बोलना है. दूसरा कि that I have to ask question after every particular number of slides. ठीक है, लेट्स से मैंने 3 टेस्ट केस प्रिपेयर किए और 3 टेस्ट केस को सॉल्व करने के लिए लेट्स से मेरे को कितना टाइम लगा? लेट्स से 1 hour. Let's say 1 hour, maximum 1 hour. So how much time it will take for one test case? एक टेस्ट केस को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा? That is the test case preparation metric. So it is used to calculate the number of test cases prepared and the effort spent for the preparation. Effort means time, कितना टाइम लगा उसको spend करने के लिए. ठीक है, so I have given an example that number
of test cases are 240. So 240 अगर मेरे test cases है, so it 10 hours spend the time for the preparation of the test cases. 10 घंटे लगेंगे मेरे को test cases 240 test cases को prepare करने में. तो just tell me how much time it will take for in 1 hour, how many test cases I can perform. ठीक है, 1 घंटे में कितने परफॉर्म कर पाऊंगा. Then I will measure the test case preparation by dividing the number of test cases with the effort spent on test case. ठीक है, that is 240 divided by 10. So I got the test case preparation metric as 24 test cases per hour. Okay, so one of the metric to find the efficiency is this one. Okay. Second, under the process metric is test design coverage. It helps to measure the percentage of test case covered against the number of requirements. As per the requirements of the user. मेरे को जो यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाउ मैनी टेस्ट आई हैव परफॉर्म, मैंने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने टेस्ट परफॉर्म कर लिए. ठीक है, सो लेट्स से आई एम टेकिंग द क्लास, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट इज सर काइंडली स्पीक इन पंजाबी. सर पंजाबी में बोलिए. बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्पीक इन हिंदी, सर हिंदी में बोलिए. कुछ बच्चे बोलेंगे सर काइंडली स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलिए. ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा स्लो बोलिए, सर थोड़ा फास्ट बोलिए, सर थोड़ा कम टाइम लीजिए, सर थोड़ा ज़्यादा टाइम लीजिए. ठीक है ना. सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स. अब वो बच्चों के 5-7 रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आ गए. लेट्स से आई एम हैविंग 7 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. उन 7 में से मैंने कितने रिक्वायरमेंट पे टेस्ट करके अपने आप को इम्प्रूव किया. ठीक है, या अपनी बच्चों को इम्प्रूव किया या अपने आप को इम्प्रूव, दोनों को एक चीज को इम्प्रूव हुआ. ठीक है, सो वो दैट इज द कैलकुलेशन. 7 रिक्वायरमेंट से मैंने कितने रिक्वायरमेंट में मैं टेस्ट परफॉर्म किया एंड आई गेट द रिजल्ट. सो दिस इज द टेस्ट डिजाइन कवरेज. इट हेल्प्स टू मेजर द परसेंटेज ऑफ टेस्ट केस कवरेज अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है 100 and the number of requirement mapped to test case. So 100 में से मैंने 98 रिक्वायरमेंट पे मैं टेस्ट केस बना लिए हैं. ठीक है, so it will just give me the percentage that 98% of test case coverage is being done from my side. किसी ऑर्गेनाइजेशन 98% टेस्ट कवरेज कर ली, that is very good. ठीक है, next is the under the process metrics is the test execution productivity. It determines the number of test cases that can be executed per hour. कि हमने टेस्ट एग्जीक्यूट कितने किए हैं. ठीक है, कितने एग्जीक्यूट हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं. ठीक है, सो जब एज पर रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स थी मेरे पास, मैंने कहा कि अगर इतनी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो इन रिक्वायरमेंट्स को देख के मैं इतने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनाऊंगा. मेरे पास 7 रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की. अब 7 रिक्वायरमेंट्स को देख के मैं 10 टेस्ट केस बनाऊंगा. ठीक है, 10 टेस्ट केस बनाऊंगा, ये मैंने बोला. अब और 10 में से मैंने कितने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया. ठीक है, उन 10 में से मैं कितने को एग्जीक्यूट कर पाया हूँ, दैट विल गिव मी द टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी. मैंने बोला था मैं 10 केस बनाऊंगा बच्चों की 7 रिक्वायरमेंट में, 10 मैंने बना लिए. उन 10 में से मैंने कितने एग्जीक्यूट किया, लेट्स से मैंने 6 एग्जीक्यूट कर पाया. इसका मतलब 60% ऑफ द टेस्ट केस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड फ्रॉम माय साइड. मैं सारे नहीं कर पाया, 60% कर पाया हूँ. ठीक है, एंड आई सेड कि अगर 10 बच्चों ने 10 में से मैंने एग्जीक्यूट किया है तो 10 को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, वो बताऊंगा कितना टाइम लगा, और 1 घंटे में मैंने कितने किए. ठीक है, सो नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड इज 180 एंड एफर्ट स्पेंड फॉर 180 इज 10. 10 घंटे लगे मेरे को 180 टेस्ट केस सॉल्व करने के लिए, तो 1 घंटे में मैंने कितने किए, 18 टेस्ट केस सॉल्व कर लिए. ठीक है, let's move further. Next is the metric is the text execution coverage. So this is text execution coverage. It measures the number of test cases executed against number of cases. 10 केस मैंने प्लान किए थे, 6 केस में कर पाया हूँ. That is the test execution. ठीक है, total number of test case plan 240, number of test case executed 160. तो execution percentage क्या निकली, 75%.
जैसे मैंने 10 केस बनाए थे, 6 कर पाया हूँ, मेरा 60% निकला था, इसका 75% आंसर आएगा। वन ऑफ द मेट्रिक फॉर द software testing is under the process metric is the test execution coverage. Under process metric, one more is test case passed. ठीक है, अब टेस्टिंग मैंने परफॉर्म की है, टेस्टिंग परफॉर्म करने से कितने टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया, कितनों का नेगेटिव आया। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द परसेंटेज नंबर ऑफ टेस्ट केस पास। ठीक है, जितने भी मैंने एग्जीक्यूट किए होंगे, जैसे मैंने 10 किए थे, 10 में से मैंने 6 एग्जीक्यूट किए थे, अब 6 में से कुछ टेस्ट पास हुए, कुछ टेस्ट फेल हुए हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट का मेरे पास रिजल्ट आया, कुछ टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ पाया, जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया दैट बिकम फेल, जिसका रिजल्ट आ गया दैट इज पास। अब 6 में से आई सेट की 4 का रिजल्ट आया, 4 गेट पास, 2 पास नहीं हो पाए, देन 4/6 will get the test cases pass percentage. So it is a number of percent number of test cases passed. So total cases passed is TTP divided by TTE. What is TTP? Is total number of test cases passed, and TTE is total number of test cases executed. So it will come, let's say total number of TTP value is 80 and TTE value is 90. Okay, I write over here, let's say the value is 80 for TTP and let's say the value over here is 90. ठीक है, मैंने टोटल टेस्ट केसेस बनाए थे 90, कि मैं 90 टेस्ट केसेस मैं एग्जीक्यूट कर पाया हूँ, मैंने किए हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद कितने पास हुए हैं, 80 पास हुए हैं। तो पास परसेंटेज कितनी बन गई, 89%, दैट इज 80 by 90 into 100। ठीक है, so this metric can be used to find out how many test cases have been passed under the process metric। कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट केस मैंने पास कर लिए हैं, जितने मैंने एग्जीक्यूट किए थे उनमें से। ठीक है, अगर कुछ पास हुए हैं तो कुछ फेल भी होंगे। ठीक है, सो it is to measure the percent of number of test cases failed। ठीक है, so टोटल मैंने 90 के थे, 80 पास हुए थे, तो 10 फेल हो गए। सो आई राइट 10 by 90 into 100, तो 11% जो मैं मेरे टेस्ट फेल हो गए, जितने मैंने एग्जीक्यूट किए थे उनमें से। ठीक है, सो दिस अंडर द प्रोसेस मेट्रिक। वन मोर इज टेस्ट केस ब्लॉक्ड, कितने टेस्ट केस ब्लॉक्ड हो गए। ठीक है, it is used to measure the percentage of test case blocked। So I mentioned over there that test case blocked means कुछ मेरे को ब्लॉक करने पड़ गए, 90 में मैंने 5 ब्लॉक कर दिए, तो it will become 5.5% are being blocked। ठीक है, because of some reasons मैंने उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने उनको वहीं पे ब्लॉक कर दिया। So these are the various metrics that come under the process metric। ठीक है, once again टेस्ट केस प्रेपरेशन मेट्रिक। ठीक है, कि जितने मैंने टेस्ट केस बनाए हैं, वो टेस्ट केसेस को सॉल्व करने का कितना टाइम लगेगा मेरे को, सारे के सारे टेस्ट केसेस को वो आई विल चेक इट, एंड देन फ्रॉम दैट उनमें से मैं फाइंड करूंगा कि 1 घंटे में कितने मैं टेस्ट केस प्रिपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने देखा कि मैं 240 टेस्ट केसेस बनाऊंगा, और 240 टेस्ट केसेस को बनाने के लिए मेरे को 10 आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। तो मैंने इसको 240 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आई गेट द रिजल्ट, मेरे को रिजल्ट मिल गया टेस्ट केस प्रिपरेशन का, दैट इज इन 1 आवर आई विल परफॉर्म 24 टेस्ट केस। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट केस प्रिपरेशन मेट्रिक। टेस्ट केस कवरेज, कितना मैं जितने रिक्वायरमेंट्स यूजर ने मेरे को दी थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कितने को कवर कर पाया हूँ। ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट को और मेरी अपनी दोनों को मिला के रिक्वायरमेंट थी 10, और उनको देखते हुए मैं कितने टेस्ट केस बना पाया हूँ। तो लेट्स से 10 आर द रिक्वायरमेंट्स, 8 आर द टेस्ट केसेस दैट आई हैव मेड। 10 रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं 8 टेस्ट केस बना पाया हूँ। इसका मतलब 80% मैंने टेस्ट केसेस बना लिए हैं। 80% इज ऑल्सो गुड, बट जितने ज्यादा बने उतने ज्यादा अच्छे। ठीक है, सो टोटल नंबर रिक्वायरमेंट्स 100, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट मैप्ड टू टेस्ट केसेस
और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कितने टेस्ट केस बनाए 98. So I get the test design coverage as 98%. Test execution productivity, it determines the number of test cases that can be executed per hour. So कितने टेस्ट केस मैंने एग्जीक्यूट किए हैं और उनको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा. In this example I said that I have executed 180 test cases और 180 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने को मेरे को 10 साल लगे. तो 1 घंटे में कितने करूंगा, 1 घंटे में 18 टेस्ट केस परफॉर्म करूंगा. सो दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस. देन हाउ मच कवरेज आई हैव डन. टोटल ऑफ टेस्ट केसेस प्लान, कितने प्लान किए थे 240, एग्जीक्यूट कितने अब किए 160. सो कितना कवरेज हुआ मेरे को 75% कवर कर पाया हूँ टोटल टेस्ट केसेस में से. ठीक है. And so how many are passed, that percentage, how many are failed, that percent, and how many are blocked, and these are that percentage. Okay, so these are the some of the metrics through which जिनकी हेल्प से मैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एफिशिएंसी को काउंट कर पाऊंगा. ठीक है. सो जितनी कम फेल हो उतनी अच्छी है, जितनी कम ब्लॉक हो उतनी अच्छी है, जितनी ज्यादा पास हो उतनी अच्छी है. ठीक है. जितनी ज्यादा कवर हो उतनी अच्छी है. ठीक है. सो अंडर दिस some should be must have least value, some must have maximum value. ठीक है. सो इसके हिसाब से हम टेस्ट की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. Okay, I have one question over here. टेस्ट केस ब्लॉक किया है कि व्हेन एवर आई वाज टेस्ट, जब भी मैं टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था मेरे को लगा कि ये टेस्टिंग मेरे को नहीं करनी चाहिए, मैंने को उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया. देयर इज नो नीड टू गो फर्दर ऑफ इट, इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये टेस्टिंग काम की नहीं है, मैंने उनको वहीं पर ब्लॉक कर दिया. ठीक है. आगे तो ये आ तो गई, ये फेल में ही है. ठीक है. आ तो ये फेल में की है, मगर उन फेल क्यों हुआ क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया. ठीक है. दिस कम अंडर फेल बिकॉज इसने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया. ठीक है. इसको ये फेल क्यों हुई है क्योंकि इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी करने की, मैंने ऐसे स्टार्ट कर दी इसको. ठीक है. दैट्स व्हाई आई ब्लॉक्ड इट. ओके. बिफोर मूविंग फर्दर, I hope you understand all the process metrics. ठीक है. On the basis of the process, I'm going to ask you one question. ठीक है. ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. Then give me the answer of it. Very good. Go ahead. Acceptance testing is done from the customer side, है ना. So whenever the customer accept it,
again the customer has to perform test. उसने भी test perform करने हैं. मैं emergency software बनाया, ठीक है. मैं का software अमरजीत, I have done all the testing as per your requirement. Accept it. You accepted it and you reached at your destination. आपने ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ run ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ software ਨੂੰ, ठीक है. And as per your requirement, nothing is there. कोई उस changes नहीं सीखा. But what happens while moving from this organization to your home, to your factory, to your office, something come in your mind. ਤੁਹਾਡੇ mind 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ. You didn't share with me as a requirement, but when you reached home, you checked that software as per your that requirement. ਜੋ requirement ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ requirement ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ check ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ. So that is from the customer end. ठीक है. और कस्टमर एंड ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ कहता कि this is one of the, you can say, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ. So I will say sir, you didn't discuss with me. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਯੂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਟ ਕਮ ਐਟ ਯੋਰ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, then you will see कि ये acceptance testing जो हैगी है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. just wait for next slides, ਠੀਕ ਹੈ. Okay, quite enough for now. Okay student, last 5 seconds now. I'm going to close it. Okay then, thank you. Okay, one last question regarding this जितनी slides ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक ਕੀਤੀਆਂ, उस जितने स्लाइड्स हमने अब तक किए उस स्लाइड्स को लेके I give you one more question, ठीक है. Again read the question carefully and then try to give the answer of it. Come on students, try to give the answer. majority of students have given the correct answer. बाकी बच्चे भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें. After reading all the answers carefully, सारे आंसर ध्यान से पढ़ने के बाद then select one option and then submit it. Amarjeet,
Amarjit नाम है ना? Let me check. नाम भूल जाते यार. हाँ, Amarjit. Why you have always uh, this कोई सॉफ्टवेयर आਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ software section 1 फिर 2 version 2 version 3 version 4 version 5. Why this change in versions? This change in version only because of this that किसी जगह पे भी 100% रिजल्ट नहीं आ रहा. ठीक है. So again I'm going to tell you it's very difficult to get 100% result. ठीक है. So very rarely, very rarely you get 100% result, but still if you get the result in 90s, not bad. एक गल तुहानू स्टार्टिंग में गई सी स्लाइड पे कि 100% लियाना रिजल्ट बहुत मुश्किल है. ठीक है. क्योंकि at any point something might be left from the developer or tester. ठीक है. or at any point something is being missed by the customer. ठीक है. So 100% चीज लानी very difficult software development ਦੇ ਵਿੱਚ, but still if you get 90% or 95% result of it, it is quite very good sufficient और बहुत अच्छा माना जाता है. ठीक है. Who is this? Okay then. Thank you very much, students. I'm going to close it now. Last 5 seconds to close. Okay, let's start further. So it is the which of the following equation is used to measure the test case block metric? It is the total number of test cases blocked divided by the total number of test cases executed into 100. Okay. So section B, option B is the answer of it. Let's move further. Next is the product metric. So process is for the efficiency, product is for the quality. Okay. It is used to tackle the quality of the software product. So first metric is the error discovery rate. It is to determine the effectiveness of the test cases. That is the error discovery rate. That is the TDF divided by TTE to 100. That is total number of defect founds and total number of test cases executed. So which we have done the total test cases executed 240 and total number of defect found is 60. So error discovery rate is 25%. ठीक है. So error discovery rate जितना कट होएगा उतना अच्छा होएगा. जिन्नियां कट errors found हो testing करने वाले उतना ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. Because we have done least error in software development. अगर ज़्यादा errors आने गया it means some mistake is being developed by the developer. Developer साढ़े इतने sufficient नहीं है कि इतने अच्छे नहीं है कि अगर हमारे को ज़्यादा परसेंटेज रिजल्ट आ रहा है इन डिस्कवरी रेट. अगर हमारा डिस्कवरी रेट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ये है कि द डेवलपर आर नॉट डूइंग द वर्क मैच्योरली. सो ईदर वी हैव टू चेंज द डेवलपर्स. ठीक है. सो इन दिस केस वी फाउंड दैट टोटल नंबर डिफेक्ट फाउंड व्हेन हमने टेस्ट परफॉर्म किए तो वी फाउंड दैट 60 डिफेक्ट्स वर फाउंड among the total executed test cases 240. So result आ गया 25% is a very high result of error discovery rate. ठीक है. जितनी ज्यादा error discovery rate आएगी उतना quality खराब होगी. ठीक है. So this is what shows the quality of the software. There's error discovery rate. Defect density determines the stability of the application. How much the application stable is, total number of defect identified and total number of requirement size. Total size kya hoga? That is size means the size of the total number of defect identifies is 80. Actual size is that size of requirement. So defect density is 8. That so one if we let's say 1 unit of requirement we get the density at 8
defects were found in 1 unit of requirement of the user or size of the software. Okay. Next is the under the product metric is defect removal efficiency. It allows us to compare the overall defect found before delivery of the software and after delivery of software. ठीक है. जब तक हमने सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को नहीं दिया तब तक, और जब हमने अपना सॉफ्टवेयर कस्टमर को दे दिया उसके बाद. ठीक है. So it allows to compare the overall defect removal efficiency. So what is overall? TPRE means pre-delivery and POS means post-delivery. ठीक है. So we found that total number of defects found before delivery, we count that, and total number of defects found after delivery, we count that. Okay. So we said that before delivery it was 80, and after delivery it was 10. So the defect removal efficiency is 89%. That is very good. We have removed 89% of error, because all the errors that were as per the requirement of the user, that was pre. जो requirements user ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ developer ਨੂੰ कि on this basis or requirement kindly develop a software. So when the software is at developer end and the developer find the errors as per requirement, as per the user requirement, and solve it, और उसको remove कर दिया, ठीक है, that become the pre delivery. When we deliver the software to the customer, and when customer reached his destination and again perform testing at his own level, the customer is performing testing his own level, that is after development of the software. It means the customer is now testing on some other requirements. That requirements are not discussed with the developer. वो requirement पे test करा जो requirements ने developer के साथ sharing की थी, ठीक है, and that is a post delivery. ठीक है. So 80 are the pre-delivery, 10 are the post-delivery. It become 80 divided by 90 into 100. It become 89% efficiency of the test of the removal of the errors. ठीक है. That is good. So these are the product metric that is that define the quality of the software. Okay. So we have discussed process and product metric for the software testing metric. Again, moving further, let me check how much you understand about the process and the product. Okay, let's see how much you understand about the process and the product metric. I'm going to launch a question. बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, that give the answer of it. Okay, सोनू पहले इसका आंसर दे दीजिए, then I will repeat it again. ठीक है.
Come on, student, give the answer. The last 10 seconds. Thank you very much, students. I'm going to close now. Okay. Which among the following is used to improve the efficiency? Again, I told you earlier, efficiency is for process and the quality is for product. So obviously answer will be the process metric. Okay, again, product metric is used is used to tackle with the quality of the software. So quality कैसे check करते हैं कि how much errors are there in our software. जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट घर लेके आते हैं तो घर आके हम चेक करते हैं कि उसमें let's talk about the new shoes, pair of shoes लेकर आए हम. We check is there any fault in the pair of shoes? Is there any fault in the right shoe or in any fault in left shoe? मैं हम नए शू घर लेकर आए, चेक घर आके चेक करते हैं लेफ्ट शू ठीक है, राइट शू ठीक है. सो उसमें हम कोशिश करते हैं, होता कुछ नहीं है, अब स्टिल हम फाइंड करते हैं कि हम कोई गलती निकाल लें शू में से बस, ठीक है ना. सो यू कीप ऑन फाइंडिंग द मिस्टेक इन द शू. तो अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं बोले निकली तो आप कहेंगे यार बड़ा अच्छी क्वालिटी का शू लेकर आया मैं. अगर आपको कोई यू फाइंड सम मिस्टेक्स, आपको कोई गलती निकल जाती है यार इस बार मेरे को अच्छी क्वालिटी का शू मैं ले ही नहीं पाया, है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एरर्स यू हैव फाइंड, कितनी एरर्स आप फाइंड कर पाए. सिमिलरली इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस और टेस्ट केसेस. कि मैंने बोला कि हाउ टू फाइंड डिस्कवरी रेट, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड, कितने डिफेक्ट आपने फाउंड किए अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, जितने भी टेस्ट केसेस मैंने एग्जीक्यूट किए. तो आई हैव एग्जीक्यूटेड 240 टेस्ट केसेस and I have found 60 number of defects. 60 defects मेरे को मिले उसमें. So it means the discovery rate is 25%. Error discovery rate कितना होगा 25%. So it should be the least. कम से कम error discovery rate होना चाहिए. जितनी कम errors निकलेंगी उतना अच्छा है, ठीक है. कम errors होगी अच्छी क्वालिटी होगी, ज्यादा errors होगी ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उसकी, ठीक है. Density determines the stability of the application. Its total number of defect identified by the actual size, ठीक है. So size क्या है मेरे सॉफ्टवेयर का 10. So number of defect identifies 80, ठीक है. 10 means 10 as the requirement of the user. User ने मेरे को 10 requirement दी और उस 10 requirement को देके मैंने देखा कि मैं और 10 रिक्वायरमेंट को लेके जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो मेरे मेरे से उस सॉफ्टवेयर में से 80 डिफेक्ट्स निकला है, ठीक है. इसका मतलब हर एक एक रिक्वायरमेंट के पीछे मेरे पास 8 एरर्स निकल रही हैं. दैट इज नॉट गुड, ठीक है. दैट इज नॉट गुड कि एक रिक्वायरमेंट के पीछे मेरे पास 8 एरर्स निकल रही हैं. सो ये जितनी कम डेंसिटी होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है. And defect removal efficiency, it allows to compare the overall defect found. overall मतलब सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले और सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद, ठीक है. सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले कितनी एरर रिमूव हुई है और
कितनी फाउंड हुई हैं और सॉफ्टवेयर डिलीवरी करने के बाद कितनी फाउंड हुई। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी करने से पहले जो एरर फाउंड होंगी दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। जो यूजर रिक्वायरमेंट दिया उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फाउंड करेंगे कि इसमें एरर्स आई हैं एंड दैट एरर्स हैज टू बी सॉल्व्ड। जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होंगी सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, जितनी भी एरर हमने फाउंड की थी वो सब हमने ठीक कर लिए। अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, कस्टमर को रो हमने सप्लाई कर दिया, कस्टमर अपने अपने डेस्टिनेशन पे ले गया। अपने डेस्टिनेशन पे जाके अब क्या किया, कस्टमर ने उसको चेक किया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट शूज। कंपनी ने शू बनाई। ठीक है, कंपनी शू कैसे बनाती है, वो अपने मार्केटिंग के लोगों को सेंड करती है मार्केट में कि जाके स्टडी करो लोगों को, स्टडी को लोगों को कैसे शूज चाहिए। दे चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन द मार्केट की किस तरह का शू पसंद करते हैं लोग आजकल के। वो उन्होंने रिक्वायरमेंट ली लोगों की, उस रिक्वायरमेंट लेके उन्होंने शू बना दिया। फिर वो चेक करें कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शू ठीक बना है कि गलतियां अभी इसमें। अगर अभी भी उसमें गलतियां होंगी दैट बिकम द प्री, मतलब दैट बिकम द प्री डिलीवरी एरर्स। ठीक है, वो जब तक वो पूरी एरर रिमूव नहीं करेंगे कंपनी शू को मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी। जब वो सारी एरर रिमूव हो जाएंगी कंपनी ने शू को मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्योंकि कंपनी के हिसाब से वो सारी एरर्स जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, सब सॉल्व हो गई हैं। अब आपने मार्केट जाके शू परचेज कर लिया, परचेज करके आप घर ले आए, स्टिल यू फाइंड सम एरर इन इट। आप फिर घर जाके ढूंढने की कोशिश करते हो कि मेरी लेफ्ट शू और राइट शू में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी इंटरप्शन होगी बीच में। ओके, जब आप शू लेकर आते हो, ठीक है, एंड यू आप घर आके फिर शू में एरर ढूंढनी शुरू करते हो कि किसमें कोई गलती तो नहीं आ रही। ठीक है, यू स्टार्ट फाइंडिंग द एरर इन द शू। ठीक है, एंड इसका मतलब यू स्टार्ट फाइंडिंग एरर द शू आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब आप वो एरर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो जो कंपनी के लोग, मार्केटिंग के लोगों ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कैप्चर की थी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज कि सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले की नंबर ऑफ एरर्स एंड सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद की नंबर ऑफ एरर्स। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के पहले की नंबर ऑफ एरर्स थी 80 एंड सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद नंबर ऑफ एरर्स 10। सो इट बिकम 80 divided by 10, sorry, 80 divided by 80 plus 10 is 90, 80 divided by 90 100, so 89% of errors are being removed, that is good। जितनी ज्यादा परसेंट ऑफ एरर रिमूव होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस shows the quality of the software under product metric। ठीक है, let's move further। Next is the
टेस्ट मेट्रिक लाइफ साइकिल. सो हर एक मेट्रिक को सॉल्व करने के लिए एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है. सो व्हाट दैट life cycle is, and in this life cycle there are 4 stages. Okay, during these phases different factors related to the software production are measured for development process. So what the phases are: analysis phase, communication phase, evaluation phase, and reporting phase. Okay, so what the analysis phase is: it is responsible for identification of metrics as well as the definition. So which metrics we are going to use for our software efficiency calculation, and in this phase metric which have been generated are identified, which are then defined by the tester. ठीक है, कौन सी मेट्रिक टेस्टर ने यूज की है सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और क्वालिटी को मेजर करने में, that is analysis phase. Communicate phase, it helps explaining the need and significance of metric to stakeholder and testing team. It will ये हमें बताएगा कि ये जो सी मेट्रिक हम यूज कर रहे हैं ये कितनी फायदेमंद है सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए और कितनी फायदेमंद है स्टेक होल्डर के लिए, क्या दोनों के लिए ये अच्छी है. ठीक है, which metric is good for decision making for stakeholder, कौन सी मेट्रिक है जो स्टेक होल्डर को हेल्प करेगी डिसीजन लेने में, कौन सी मेट्रिक है जो हेल्प करेगी टेस्टिंग टीम को डिसीजन मेकिंग में, और कौन सी मेट्रिक है दोनों को हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, इट एजुकेट द टेस्टिंग टीम अबाउट डाटा पॉइंट्स, ठीक है, दैट नीड टू बी कैप्चर्ड फॉर प्रोसेसिंग द मेट्रिक. जब भी कोई मेट्रिक यूज करते हैं उसका कोई ना कोई आंसर निकलता है, उसका जब कोई आंसर निकलेगा वो आंसर टेस्टिंग टीम को कितना हेल्प करेगा. ठीक है, that answer could be efficiency or quality, कुछ भी हो सकता है. Here the need of metric is explained to the stakeholders. Moreover, testing team is educated about the data points required for generating the metrics. Next is the evaluation phase. It helps to capture in capturing the needed data. Evaluation किस पे करते हैं, जब हमें कोई डाटा मिलता है उस पर evaluate करते हैं. ठीक है. It also verifies the validity of captured data and calculate the metric value. जो डाटा हमें मिलता है उस डाटा को लेके हम वैल्यू कैप्चर करते हैं. डाटा मीन्स हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव मेड, कितने टेस्ट केसेस आपने बनाए हैं, कितने आपने एग्जीक्यूट किए हैं, वो डाटा मिल गया आपको. ठीक है, उस डाटा को लेकर आप फिर अपने मेट्रिक को जनरेट करते हो. द डाटा यूज्ड फॉर जनरेटिंग द मेट्रिक इज कैप्चर्ड एंड वेरीफाइड. It is based on this captured data that the metric is calculated. Reporting phase is developed. It develops the report that with an effective conclusion. So whenever you calculate a metric, जब भी आप कोई metric की value calculate करते हो, from that value you give the result, whether it is a good efficient, it is a good quality, least efficient, bad quality. So on the basis of that answer, you make the conclusion. The metric report is developed with all the required information, which include graph, pie chart, and other distribution to stakeholders. After the evaluation of this report, the feedback is provided by the stakeholder for any intended improvement. So जो से पहला आपने वर्जन 1 बनाया था, वर्जन 1 को लेके आपने metric यूज किए, उसका रिजल्ट लिया. Then वर्जन 2 बनाया, अगेन उस पर सेम प्रोसेस यूज किया. वर्जन 3 बनाया, सेम प्रोसेस यूज किया. वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 पे जो आपका ग्रोथ है, एरर की बढ़ रही है, कम हो रही है, वो ऐसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द बार चार्ट और पाई चार्ट. ठीक है. ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इट. आप ये एग्जांपल नोट कीजिए. इफ यू हैव कॉपी या पेन, अगर आपके पास कॉपी और पेन है. मैंने आप यहाँ पे एक टेबल बनाया है. इस टेबल पे मैंने 11 टेस्टिंग मेट्रिक वैल्यूज को यूज किया है. ठीक है, कि मेरे पास टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड कितने हैं 65, टेस्ट केस रिटर्न कितने हैं 90, टेस्ट केस नॉट एग्जीक्यूटेड कितने हैं 25, टेस्ट केस पास कितने हैं 30, टेस्ट केस फेल के 25, टेस्ट केस ब्लॉक कितने हैं 10, टेस्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं 30, नंबर ऑफ वैलिड डिफेक्ट कितने हैं 22. ठीक है, इनवैलिड डिफेक्ट कितने हैं 8,
एंड जो वैलिड डिफेक्ट्स मतलब क्या है, वैलिड डिफेक्ट हम ले सकते हैं, हम उसको प्री डिलीवरी को ले सकते हैं, इनवैलिड डिफेक्ट हम ले सकते हैं पोस्ट डिलीवरी को। ठीक है, इसलिए बच्चे जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, so valid means pre-delivery, invalid defect means post-delivery. Right over here, pre, right over here, post. ठीक है, defect by testing team and developing team 18 and defect by customer is 8. ठीक है, so you can use this data, and by using this data, अगर आप ये नोट कर लो कॉपी पे, तो मैं आपको अगला काम दूं फिर। Okay, using this, you can calculate the process metric, you can calculate the product metric. ठीक है, कैसे करोगे? You can do it with the help of these equations. ठीक है, percentage test executed, not executed, passed, failed, blocked, coverage, acceptance, rejection, and efficiency. ठीक है, so this is how you can calculate all the metrics by using this table. अगर आप टेबल को बना लो, and you can calculate all the metrics, and you will learn that how we can calculate मैंने आपको ये टेबल बना के दिया है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, और इस टेबल की वैल्यूज को लेके अब आपने क्या करना है कि जितने भी हमने प्रोसेस मेट्रिक और प्रोडक्ट मेट्रिक हमने अब तक पढ़ी हैं, उन सबकी इक्वेशंस को लेके और ये वाली वैल्यू उठा के, वैल्यू उठानी है आपने ये वाली। ठीक है, इक्वेशन यूज करनी है जो अभी आपने आपने पढ़ी है इस स्लाइड्स में, वो इक्वेशंस को यूज करके और वैल्यू ये वाली उठा के आपने उसका रिजल्ट फाइंड करना है। आपने रिजल्ट फाइंड करना है प्रोसेस मेट्रिक का, जितनी भी उसके अंदर आती है। आपने रिजल्ट फाइंड करना है प्रोडक्ट मेट्रिक्स का, जितनी भी उसके अंदर आती है। ठीक है, वैल्यू उठानी आपने ये वाली। ठीक है, और फाइंड आपने उसका रिजल्ट फाइंड करना है, फिर इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे यूज करोगे या ना, आपको समझ आ जाएगी कि ये मेट्रिक हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, I hope you understand today's topic of software testing metric. ठीक है, so what are the metric we have to use? So